5x square is a little flat graph. It is less steeper than x square graph. ठीक है? Yes, this is an upward parabola, Mama. Good. Now, the shape that you are right now seeing is a parabola. If I just okay, consider this graph. This graph is a parabola. The shape is known as a parabola, ठीक है? Or it is also known as concave up graph. There is also another graph, concave down graph, और वो जब आता है जब you have the coefficient of x squared as negative. This is minus x squared का graph. ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये जो x squared का graph है, guys, ये जो x squared का graph है, what is the x intercept of this graph? सर कोई भी x intercept नहीं है. Are you sure? Yes. X intercept the is origin. the point. Exactly, the origin. X intercept is basically the point where the graph is going to intersect the x-axis. So it is intersecting the x-axis at 0, and in this case, the y intercept is also 0. And if one of the special property of a parabola is that it is symmetrical about the turning point. There you're going to see a turning point over here. The curve is symmetrical about the turning point. So if you just consider the graph before 0 and then consider the graph after 0, you're going to see that the two parts are symmetrical. So the line of symmetry is basically x equals to 0 is the equation of the line of symmetry. Okay? No other equation is a line of symmetry for this graph. It's x equals to 0, because x equals to 0, the line is going to divide this graph into two equal parts. Yes, Noman, you are right. All right, so this was the graph of y equals to x square. The equation is y equals to x square, और इसका turning point यहाँ पे है, ठीक है, 0, 0. अच्छा, what is the minimum value of this? Is a quadratic function. What is the minimum value of the function? जब आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, आप चेक करेंगे कि y कोऑर्डिनेट किसका मिनिमम है, यानी कि y कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन पे. So what is the minimum value of the function? 0. 0. ठीक है. Now tell me, if the equation would have been plus 2, so क्या हुआ? What does plus 2 does in your graph? Sir, y intercept की value change हो गई. That means that the entire graph goes 2 units upward. जब पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट भी मूव करेगा. पहले टर्निंग पॉइंट वाज 0, 0. एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा याद रखना. नाउ प्लस 2 होने की वजह से द टर्निंग पॉइंट आल्सो शिफ्ट्स अपवर्ड. ओके, सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट आर द एक्स इंटरसेप्ट्स, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिप्लाई? Maham, whatever I'm teaching right now doesn't need add maths. ठीक है, तो I'm starting off with very basic. तो add maths का इसमें कोई मसला ही नहीं है. Even if you do not have add maths, आपने maths में quadratic graphs draw तो किए हैं ना, ठीक है. So inshallah it's going to be easy for you. मैं small concepts भी बनाऊंगा आप होंगे. ये बताओ कि what was the question? What is the x-intercept of this graph? 0. How many of you agree with him? Is there going to be an x-intercept? Noman says it's 0. Qazi says it's 0. Guys, x-intercept is a point where the graph is going to intersect the x-axis. क्या मेरा ये वाला ग्राफ x square plus 2 का ग्राफ is intersecting the x-axis? Oh, sorry, sir, No. 0 नहीं है, कोई नहीं है x-intercept. Sorry. Exactly. So there is no x-intercept. ठीक है, तो यही वजह है कि जब आपके पास अगर ये इक्वेशन होती थी, जस्ट अ सेकंड, जब आपके पास ये इक्वेशन है x square plus 2, ठीक है, लेट्स से दिस वाज द इक्वेशन, एंड मैं आपसे कहता था कि x इंटरसेप्ट फाइंड करो, you would have plugged y as 0 and then try to find the x intercept.
तो आप यहाँ पे आके स्टक हो जाते थे, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो आप अपनी वर्किंग में कहते थे नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस का मतलब है नो रियल रूट्स, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब रूट्स एग्जिस्ट ना करने की वजह ये थी कि द ग्राफ, दिस ग्राफ इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Now y-intercept is -2. Yes, because the curve is intersecting the y-axis at 2. Y-intercept is -2. Now let me change this equation to -2 x squared -2. Now see what happens to the graph. You can clearly see the two x-intercepts. ठीक है? And you have the y-intercept as well. Okay? अच्छा, अब इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं। Let's say the equation was y equals to x squared -2. और मैं आपसे कहता कि यार गिव मी द x इंटरसेप्ट, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व x स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। सो इसके सॉल्यूशंस मुझे बताएं। सो व्हाट यू गाइस वुड डू इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट, गाइस रिमेंबर हम प्लस माइनस लगाते थे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। नाउ if you just take the value out from your calculator, for square root of 2 it's an irrational number, so square root 2 की decimal value is going to be 1.414, ठीक है, and minus 1.414. Now you can see on your graph के these are the x intercepts. अब roots exist करते हैं क्योंकि ये graph x axis को cross कर रहा है, ठीक है। So these are the solutions. Now if I want you to find me the x coordinate of the turning point in this case, तो मैं क्या करूंगा? रिमेंबर मैंने ये कहा था कि द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द टर्निंग पॉइंट। अब सिमेट्रिकल का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से इक्वली अपार्ट है, सो इट इज एट एन इक्वल डिस्टेंस। दैट मीन्स कि दिस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ दीज टू एक्स वैल्यूज। तो अगर मुझे टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, I just, and if I know the two solutions, the 2x intercept, I can just add them up. एक है square root 2 और एक है minus square root 2. When you add them up and take the average out of it, सही divide by 2 करोगे तो तुम लोग को 0 मिल जाएगा। And you can see that the ये जो turning point है इसका x coordinate क्या है? 0. ठीक है। Now when you have the equation, तो y coordinate of the turning point आ सकता है। The equation is x square minus 2. Equation में you plug in x as 0, y की वैल्यू आ जाएगी -2, so that is the y intercept. So 0, -2 is the coordinate of the turning point. सही है, ये बात समझ में आई सबको? Yes, Noman, you are right. ठीक है। Now how will the graph look like if I would have multiplied this equation by negative? सही है। What is the difference between the two graphs? What can you say about two graphs? एक मिनिमम कर्व है क्योंकि इसमें मिनिमम पॉइंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, इट इज गोइंग टू जनरेट अ मिनिमम कर्व which we know as a concave up curve, ठीक है, दिस इज कॉन्केव अप, ऊपर जा रहा है। एंड व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टाइम्स माइनस इज +2, ठीक है। द you can see that the x intercepts are going to come out to be the same. The only difference is कि पहला वाला ग्राफ और दूसरे वाला ग्राफ are basically reflection of each other in the line in the x axis. तो आप ये कह सकते हो कि अगर x स्क्वायर -2 के ग्राफ को, इस फंक्शन को आप सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फ्लिप हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो ग्राफ है ना वो फ्लिप हो जाएगा। तो पहले वाले ग्राफ का अगर y इंटरसेप्ट आपके पास था 0 -2, अब फ्लिप होने के बाद चेक करो वो क्या हो गया, 0 2। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा ग्राफ, ठीक है।
Is everyone clear कि if you multiply the function with a negative sign वो ग्राफ फ्लिप कर जाता है एक्स एक्सिस में? ये चीजें क्लियर है? ये मैं सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. Yes, sir. Okay. All right. So हमने जो इक्वेशन सॉल्व की ना उनको जरा प्लॉट करके चेक करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. एक्स स्क्वायर minus 6x plus 9. Okay, let's see how the graph look like. Now, what can you say about this graph? Is it a minimum curve or a maximum curve? Minimum. Minimum curve. Minimum curve. What is the x-intercept? 3. 3. ठीक है. And what are the coordinates of the turning point? इस graph 3,0. अच्छा, you guys can you see कि ये graph एक ही जगह पे intersect कर रहा है x axis पे. It is not intersecting the x axis at more than one place. दो जगह पे कट नहीं कर रहा. It's only intersecting at one place. So we call, obviously this is a solution. हमने जब solve की थी equation, so we got x equals to 3 and x equals to 3. So we call them repeated roots. ठीक है, we are getting the repeated value and you guys can see कि ये जो curve है ये आपकी x axis पे tangent हो गया है. I want you to see this line. I want you guys to see the line y equals to 0, ये वाली, and ये curve. ठीक है, would you guys agree that this curve is basically the tangent to this line, tangent to the x axis? You guys have a concept of what a tangent is. ठीक है? So there is only one x intercept. The turning point is also over here. The curve is the tangent to the x axis. और इसका y intercept क्या होगा? Sir, it doesn't have a y-intercept. It does have a y-intercept. If I just zoom out of the graph, it is having a y-intercept, and you are going to see it. The y-intercept is 9. 9. Oh, But 9. but could I directly tell without having the graph? Can I tell what the y-intercept is going to be? If you want to tell that, you are going to look at this equation: x square minus 6x plus 9. Okay, and the last constant value is basically the y-intercept, because यहाँ पे जब y-intercept के लिए in the equation you plug in 0, x is 0, so when you plug x is 0, this is going to be 0, this is going to be 0, and you are going to get 9. Okay, clear? अब पेपर 1 में quadratics के कौन सी knowledge test होगी वो यहाँ पे मैंने लिख दी. Carry out the process of completing the square for a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Now everyone is going to be aware of this form of the quadratic expression. And by the way, polynomial मैं बताऊंगा क्या होता है. हम ये जो quadratic equation, linear equation होती है, ये basically polynomial होते हैं. Polynomial एक ऐसा algebraic expression है जिसमें the powers of x are going to be positive integers. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी और इंटीजर वैल्यूज भी होंगी, डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी. तो लिनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल आर नोन एज पॉलिनोमियल. नाउ बिकॉज x has a power of 2, it's a second degree polynomial. You are going to be tested on completing square form, और फिर आपको इसके ग्राफ स्केच करने आने चाहिए. फिर देन दिस इज अ डिफरेंट नॉलेज, डिस्क्रिमिनेंट की नॉलेज है. ठीक है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लिनियर इनइक्वालिटीज आपको अगर पता होंगी ना, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आप लोगों के लिए इजी होगा समझना. साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसमें वन लिनियर एंड वन नॉन लिनियर होगा. ठीक है, एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन सो दैट इट रिजल्ट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये मैं सारी चीजें कवर कर पाऊंगा. अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. Do you guys have any questions so far? Okay, great. Now, the first thing that I want you to pay attention is on factorization. Okay? Let's say you get you should all now know what a quadratic equation is. A quadratic equation is a second degree polynomial where the highest power of the unknown variable is 2. Because the highest power, the degree is 2, we call this a second degree polynomial. Okay? Up we have to solve this quadratic equation by factorization. So सबसे पहले, now
since this is really easy, I want you guys to give it a try. You're going to rearrange the equation, okay, and solve this. I want you to go for middle term breaking and जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बताएं. Guys, this is the part of a lecture, ठीक है? So I really expect you guys to note down the questions. चाहिए, मैं पहले से बता रहा हूँ. I do expect you guys to note down these questions. Six x square minus 17x plus 5 is equals to 0. Now, what is going to be the middle term? Yes. So 6x square, ठीक है? अब आप किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने ओ लेवल्स में सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिकली वही अप्रोच रखनी है. You don't have to change any approach. उसी अप्रोच से you just go for middle term breaking. If you will do that, you are going to get ठीक है. Sir, you forgot to add an x in front of it. सही है, मैंने कर दिया. So if I take 3x common over here, I'm going to get 2x minus 5. And if I take negative sign common from minus 2x and 5, just take negative 1 out. So you're going to get 2x negative 5 equals to 0. As you all know, okay, these two expressions must be equal so that they can be pulled out. So it's going to be 2x minus 5 times 3x minus 1 equals to 0. Hence, 2x minus 5 is equals to 0. 3x minus 1 is equals to 0. X is going to come out as 5 over 2 and 1 upon 3. Most of them already got the answers here. ठीक है. ठीक है. If you're done with this, please move on to the second part. Is there a way to simplify this equation? Because all the terms, I see that they are multiple of 3. So if you can just take 3 common out, you're going to get 3x square minus 13x minus 10 equals to 0. सही है, आपकी equation simplify होगा, फिर 3 वहां जाके divide हो जाएगा. So that's how it is. Now it's very simple to do this. क्या factors हो जाएंगे इसके? Minus 15x plus 2x. Minus 15x plus 2x minus 10 equals to 0. You take 3 common, x minus 5. You take plus 2 common and x minus 5. You take x minus 5 common. X minus 5 times 3x plus 2 equals to 0. X is going to be 5 and x is going to be minus 2 upon 3. ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया. If you guys are struggling with any of the concept, please मुझे उसी वक्त रोक देना. Yes, very good, यार. You guys are on the right track. ठीक है. Let me know if you guys have any questions यहाँ पे. Okay. चलो. No questions? Can I move on? Guys, I do expect you guys to note down the questions. Okay. Okay. Now, right now, the question that you see may not seem like a quadratic equation अभी, ठीक है? But in fractions को जब आप simplify करोगे, it may result in a quadratic expression. So, would you guys agree कि सबसे पहले you will have to make the denominators common? Yeah. Do you guys agree कि आप लोगों को denominator common बनाने पड़ेंगे? The denominator Yes, is sir. not common. So, to make the denominators common, you're going to get 2x times x plus 3. Now, please understand that this 2x
should be multiplied by x plus 3 to get this. So 21 should also be multiplied by x plus 3. जिस तरह आप लोग कहते थे LCM लेना, ठीक है, and x plus 3 should be multiplied by 2x, so this is also going to be multiplied by 2x. 21 times, so 21 is going to be multiplied by x plus 3 and minus 2 is going to be multiplied by 2x equals to 1. You have to keep on simplifying this. This results in 21x plus 63 minus 4x over 2x squared plus 6x equals to 1. Now the entire denominator is going to be multiplied by 1. Okay, you're going to rearrange the equation and simplify it further. 2x squared uh, 21x minus 6 21x minus 10x हो जाएगा, so it's going to be plus 11x and minus 63. It should be minus 11x actually. सही. If you solve this equation, this is the simplified quadratic equation. So the entire fraction boils down to a quadratic equation. Now you can solve this. You want to solve it by keeping the equation equal to 0. So again, you can go for factorization. Please tell me the middle term. क्या आंसर आ रहा है इसका? ठीक है. If you were on the right track, you are going to get this middle term. You can take 2x common. It's going to give you x minus 9. You can take 7 common. It's going to give you x minus 9. So 2x plus 7 times x minus 9. These are the two factors, two linear factors. You equate them to 0 and solve for x. You get minus 7 upon 2 and 9. ठीक है? Are we getting the same answers? ठीक है. Great. Now